Assalamu alaikum everyone. In this video series, we shall learn how to use Web3. I shall be making multiple videos of how to use Web3 and have you get familiar with using wallets, play to earn, learn to earn, move to earn, and other many interesting projects. दोस्तों इस वेब सीरीज में हम वेब थ्री का यूजेज सीखेंगे और देखेंगे कि हम लोग वॉलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और वेब थ्री में दूसरे बहुत से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लर्न टू अर्न, प्ले टू अर्न, मूव टू अर्न और इसी तरह दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं ब्लॉकचेन बेस्ड उससे हम फेमिलियर होंगे। सो आज की इस पहली वीडियो में हम देखेंगे कि एक वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं और अपना वॉलेट रिट्रीव कैसे करते हैं। We shall learn how to create a wallet and how to retrieve our wallet. As you can see that I already have my MetaMask installed. So for this video, I shall actually uninstall my MetaMask for now so that we can start from beginning. दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम MetaMask वॉलेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास। तो सबसे पहले आप लोग MetaMask गूगल करेंगे और MetaMask की कोई सी भी एक्सटेंशन अपने ब्राउजर के लिए आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे अभी मैं फायरफॉक्स से हूं तो मैं फायरफॉक्स की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूंगा। As I'm right now in Firefox, so I shall install my MetaMask extension for Firefox. Okay, so you continue installing MetaMask add-on for Firefox. If you have Chrome or other web browsers, you shall do the same with other browsers as well. As you can see, now I do have my MetaMask installed on my Firefox. जैसा कि आप देख सकते हैं कि MetaMask मेरे Firefox ब्राउजर में इंस्टॉल हो गया है। अब हम MetaMask को खोलेंगे और एक नया वॉलेट क्रिएट करेंगे। We shall create a new wallet for MetaMask. Simply click on create, agree, and set any password for your MetaMask wallet. पहली दफा MetaMask वॉलेट क्रिएट करने पर ये आपको आपकी रिकवरी फ्रेज दिखाएगा जो आपने सेव कर लेनी है। First time when you create your MetaMask wallet, it will show you your recovery phrase. You have to save that at a secret and safe place. It will show this recovery phrase only once, so be careful. You have to
save this recovery phrase yourself. It is your responsibility. So as you can see, we have 12 words recovery phrase. I am going to copy this and I am going to save it. For me to use later. Please note that you can use this recovery phrase to retrieve your wallet later, and whoever have this recovery phrase, they will have complete control of your wallet. So this is something to be very careful of, and you will need to save this recovery phrase. Just think this as a key to your wallet. दोस्तों, इस रिकवरी फ्रेज को आपको किसी अच्छी सी जगह पर सेव कर लेना चाहिए. ये रिकवरी फ्रेज ये आपको सिर्फ पहली दफा दिखाएगा, इसलिए मेक श्योर कि आप इसको सेव कर लें. Now it is asking us to confirm this recovery phrase, the word at third point, the word at fourth place, and the word at eighth place. So we shall go here, the third, we shall pick the third one, copy and paste. The fourth one, copy and paste. The eighth one, copy and paste. Now we shall confirm, and our wallet is created. As you can see, now I do have my wallet and my network is Ethereum mainnet. दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा वॉलेट क्रिएट हो गया. So we can use this wallet address to receive different tokens and cryptocurrencies, as well as we can transfer the tokens out of this wallet. We can also use this wallet to connect to other Web3 portals. And in the next videos, I shall show you how to do all of this stuff. दोस्तों, अगली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इस वॉलेट को इस्तेमाल करते हुए हम इस वॉलेट में डिफरेंट टोकन्स और क्रिप्टो करेंसीज कैसे मंगवा सकते हैं, इस वॉलेट से दूसरे अकाउंट्स में ये टोकन्स किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस वॉलेट को दूसरे वेब3 पोर्टल्स पर कनेक्ट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. Stay tuned for the upcoming videos. Thank you.